Yes, students, in this session we will discuss about the satellite and the expression for its orbital velocity, time period and energies of satellite. So students, satellite are those heavenly bodies which revolve around planet. Yes, there are two types of satellite, natural satellite and artificial satellite. Natural satellite are those satellites which are man-made. For example, Moon is the natural satellite of Earth, and artificial satellite are those satellites which are man-made. Yes, example Bhaskar in set 1a. Now we write the expression for orbital velocity of satellite. Yes, so look, that is Earth or planet. Yes, Earth or planet. We consider Earth as a sphere, and O is the center of Earth, where whole mass of Earth at mass of Earth is capital M and radius of Earth is capital R. From the surface of Earth at a height h, there is a satellite revolve around Earth or planet in a circular path with velocity v in suffix o, v naught, that is the satellite whose mass is small m s. So the path in which satellite revolve around the planet, that path is called orbit, and the velocity of satellite in its orbit is called orbital velocity. In the circular motion, we have studied that when any body moving in a circular path, it requires centripetal force, and here centripetal force provided by the gravitational force acting between planet and satellite. So in this condition, centripetal force equal to gravitational force. So and small m into v naught square upon r plus h equal to gravitational force is the acting between satellite and planet. So capital G, capital M, small m upon r plus h whole square. So r plus h cancel out, small m cancel out. So v naught square equal to capital G, capital M upon r. So v naught equal to under root capital G, capital M upon R. Is R plus H. Is that is equation 1. Now put capital G into capital M equal to small g into capital R square. Then V in suffix O equal to under root gr square upon r plus h. Yes. So orbital velocity can be given as V O equal to r into under root g upon r plus h. Equation 3. Now if satellite very near to Earth's surface, then neglect h when h is very less than r. Yes, it is possible when satellite very near to Earth. So from equation 3, V in suffix O equal to R into under root G upon R. So V naught equal to under root G into R. That is the formula for orbital velocity of satellite when satellite very near to Earth. Now for Earth put G equal to 9.8 meter per second square
and capital R equal to 6400 into 10⁻³ meter. So V in suffix O equal to under root 9.8 into 6400 into 10⁻³. So V in suffix O equal to, that is nearly 8 into 10⁻³ meter per second, nearly. Yes, so we can write V naught equal to, basically this is 7.9, basically that is 7.9 into 10⁻³ kilometer per second. When we round off, then it can be written as 8 into 10⁻³. So velocity of satellite, orbital velocity of satellite around the earth when satellite very near to earth is 8 kilometer per hour nearly. Yes, तो देखो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सैटेलाइट वो हेवनली बॉडीज हैं जो प्लेनेट के चारों ओर रिवॉल्व करती हैं। दो प्रकार के सैटेलाइट होते हैं बेसिकली, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट वो सैटेलाइट है जो मैन मेड नहीं है, नॉट मैन मेड। जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून, जो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो मैन मेड है, जैसे भास्कर, आर्यभट्ट, स्पुतनिक, इनसैट 1B एक्सेट्रा। अब ये देखिए, अब हम ड्राइव कर रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिस पाथ पे सैटेलाइट प्लेनेट के चारों ओर रिवॉल्व करता है उसे ऑर्बिट कहते हैं, और ऑर्बिट में जो सैटेलाइट की वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो देखिए, अर्थ या प्लेनेट जिसके अबाउट एक सैटेलाइट स्मॉल एन मास का अर्थ की सरफेस से h हाइट पे रिवॉल्व कर रहा है v नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी से। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल m इंटू v नॉट स्क्वायर अपॉन r प्लस h किसके इक्वल है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। v नॉट की वैल्यू आ गई, हमने gm को gr स्क्वायर पुट कर दिया, r स्क्वायर r बाहर आ गया, तो r इंटू अंडर रूट g अपॉन r प्लस h। यदि सैटेलाइट वेरी नियर टू अर्थ है तो हम h को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो h नेग्लेक्ट है जब h वेरी वेरी लेस देन r है। ये कब पॉसिबल है, जब सैटेलाइट वेरी नियर टू अर्थ है। अब इक्वेशन 3 में हमने पुट की h को नेग्लेक्ट किया, 0 रखा, तो ये इक्वेशन आई। अर्थ सरफेस के लिए g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और r की वैल्यू 6400 मीटर पुट की, सिंप्लीफाई किया, तो बेसिकली वैल्यू आएगी 7.9 समथिंग, 7.9 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और राउंड ऑफ में हम अप्रॉक्स वैल्यू बोले तो 8 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी 8 किलोमीटर में देखें तो v नॉट है 8 किलोमीटर पर आवर नियरली। यस, नाउ नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, the time, yes, now we discuss time period of satellite. Yes, so time period is that time interval in which satellite completes its one revolution around the planet or earth. Yes, time period is that time interval in which satellite completes its one complete circular path. So time period capital T equal to, yes, in one complete circular path, how much distance covered by satellite? It is equal to the circumference of the circular path. Radius of circular path is r plus h, so circumference will be 2 pi into r plus h. This is the distance complete in one circular time upon velocity v naught. Distance upon velocity. Now put the value of v naught. Yes, put the value of v naught. V naught is the orbital velocity under root capital G capital M upon r plus h. Then time period capital T equal to 2 pi r plus h upon under root capital G capital M upon r plus h. Then capital T equal to 2 pi
r plus h into under root r plus h upon under root gm. So root means r plus h power half, and that is power 1. So we can return that t equal to 2 pi r plus h whole power 3/2 upon under root gm. That is equation 2. Yes, where capital M mass of earth or planet, capital R radius of earth or planet, s is the height from the surface at which satellite is placed. Now put capital G into capital M equal to small g into capital R square. Then time period capital T equal to 2 pi r plus h whole power 3/2 upon under root g into r square. So t equal to 2 pi r plus h whole power 3/2 upon r into root g. That is equation 3. Now if satellite very near to earth, then neglect height. So if neglect h when h is very less than r. It is possible when satellite very near to earth. So from equation 3 is t equal to 2 pi r to the power 3/2 upon r root g. Yes, तो देखो बच्चों, अब हम टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट डिस्कस कर रहे हैं. टाइम पीरियड वो टाइम इंटरवल है जिसमें सैटेलाइट एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कवर करता है. तो टाइम पीरियड t इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. वन कंप्लीट सर्कुलर टर्न में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी सर्कमफ्रेंस है 2 pi r plus h, और अपॉन वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू पुट की, सिंपलीफाई किया तो ये आया फॉर्मूला 2 pi r plus h whole power 3/2. gm को gr स्क्वायर पुट कर दिया तो ये वैल्यू इक्वेशन 3 ऑब्टेन की. अब यदि सैटेलाइट वेरी नियर टू अर्थ है तो h वेरी लेस देन r होगा. उस समय हमने h को नेगलेक्ट कर दिया, तो h को नेगलेक्ट किया इक्वेशन 3 में, तो h 0, तो t इक्वल टू 2 pi r टू द पावर 3/2 अपॉन r रूट g. नाउ it can be written as t equal to 2 pi r into r to the power half upon r into root g. r cancel, so t equal to 2 pi under root r upon g. That is the equation 4. Now for earth put capital R equal to 6400 into the power 3 meter and small g equal to 9.8 meter per second square. Then time period t equal to 2 into 3.14 into under root 6400 into the power 3 upon 9.8. When we simplify that, then time period 5075.4 second or 84.6 मिनट. yes. तो देखो बच्चों, हमने सिंप्लीफाई किया इक्वेशन t इक्वल टू 2 pi r अपॉन g. r यदि अर्थ के लिए r की वैल्यू 6403 पुट की, g की वैल्यू 9.8, सिंप्लीफाई किया तो नियरली आएगा 5075.4 सेकेंड. यदि हम मिनट में चेंज करें तो 84.6 मिनट. यस, सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट. नाउ टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी and potential energy. Yes, now we discuss total energy. Yes, total energy
capital E. Total energy of satellite is the sum of kinetic energy and potential energy. So kinetic energy of satellite half small m into V naught square. Put the value of V naught half small m into under root capital G capital M upon R plus H whole square. So kinetic energy K equal to half capital M small m capital G capital M small m upon 2R, that is equation 2, that is equation 1, and gravitational potential energy capital U equal to minus, that is R plus H, and gravitational potential energy capital G capital M small m upon R plus H. Then total energy of satellite E equal to kinetic energy plus potential energy. So minus capital G capital M small m upon 2R minus capital G capital M small m upon 2 into R plus H, or capital G capital M small m upon R plus H. We take the LCM and simplify, then we get total energy is total energy E equal to minus capital G capital M small m upon 2 into bracket R plus H. Yes, that is total energy of satellite. That is equation 2, this is equation 3, and that is equation 4. Now, when satellite very near to Earth, then neglect height h. So neglect h, height h, when h is very less than r. So total energy E equal to can be written as minus capital G small m upon 2R. Yes, that is total energy of satellite. Now look, binding energy of satellite. Binding energy is the amount of energy required by satellite to bind its orbit or to remove the orbit from its satellite from its orbit and place them at infinity. That amount of energy is called binding energy. So binding energy is equal to minus total energy. So binding minus plus, so capital G capital M is small m upon 2R. Yes, binding energy. Because why we take plus sign? Because we supply that amount of energy to remove the satellite from its orbit. तो देखो बच्चों, अब हम टोटल एनर्जी की डिस्कस कर रहे हैं. टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा. काइनेटिक एनर्जी हाफ m into v naught स्क्वायर वैल्यू रख दी. पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच, दोनों को सम किया. ये टोटल एनर्जी आ गया, एलसीएम लिया. ये टोटल एनर्जी सैटेलाइट की आई. और यदि सैटेलाइट बहुत नियर टू अर्थ है तो हम एच को नेगलेक्ट कर सकते हैं. नेगलेक्ट किया तो ये इक्वेशन आई माइनस जी एम अपॉन आर. अब बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जितनी एनर्जी हमें सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट से रिमूव करके इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए चाहिए. तो हम उसको लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी. माइनस इसलिए लग रहा है क्योंकि हम ये एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट से सैटेलाइट को रिमूव करके इन्फिनिटी पे ले जाने में. तो माइनस जी वैल्यू पुट की माइनस प्लस जी एम अपॉन 2R. सो ये है आपकी टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी. नाउ relation between escape velocity and orbital velocity is, now relation between escape velocity and orbital velocity is relation between escape velocity v in suffix a and orbital velocity v in suffix b.
So escape velocity v equal to under root 2gr, equation 1, and escape velocity v naught equal to under root gr, equation 2, equation 1 divided by equation 2. So v upon v naught equal to root 2. That is the relation between escape velocity and orbital velocity. So students, in this session we have discussed satellite, its orbital velocity, time period, total energy and binding energy, and the relation between escape velocity and orbital velocity. Thank you.